Hello, welcome to our classes. I am Dr. KK मिश्रा। यह वीडियो ट्यूटोरियल UGC NTA नेट पेपर फर्स्ट पर हमने बनाया है। ये पार्ट 10 है जिसमें कि हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पर बात कर रहे हैं। नाउ डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। 1. टुडे द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रॉब्लम इज A. pollution, B. population explosion, C. nuclear proliferation, D. natural calamities. So, the correct option is B. population explosion. 2. The major cause of global population growth in the 18th and 19th century was, here correct option is C. industrial revolution. ये याद करने की जरूरत है। Not decrease in death rates, not decrease in birth rates, it was industrial revolution. 3. Population explosion has occurred in the last, correct option is D, 150 years. 4th, the world has a population of, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन डी है 7 बिलियन, बट आज के टाइम में ये ज़्यादा है। दिस इज अराउंड 7.8 बिलियन population has increased. 5th, the study of trends in human population growth and prediction of future growth is called, correct option is A, demography. जी हाँ, it is not biography, calligraphy or psychology, it is demography. 6. Which of the following is a problem not associated with population growth? So यहाँ कोई सही नहीं है, जो भी ऑप्शंस दिए हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। 7. One of the critical mechanism by which the environment controls population of species is, here correct option is D, supply of food. Not the removal of excreta, spread of disease, check on the death rate, it is all supply of food. 8. If the rate of addition of new members increases with respect to the individual lost of the same population, then the graph obtained has, correct option is B, exponential growth. 9. Doubling time, that is TD, can be calculated by, here correct option is A, TD is equal to 70 by R. ये एक फार्मूला है जिसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है टू फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक अ पॉपुलेशन टू डबल एट अ सिंगल रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहे एक सिंगल रेट ऑफ ग्रोथ पर तो कितना समय लगेगा उसको डबल होने में। सो वी कैन यूज अ सिंपल फार्मूला नोन एज द रूल ऑफ 70। ये याद करने की जरूरत है, पूछा जा सकता है व्हाट इज रूल ऑफ 70। दिस इज व्हाट इज नोन एज रूल ऑफ 70, दैट इज TD इज इक्वल टू 70 बाई R। बेसिकली इससे डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन डबल कब होगा, कितने ईयर्स में होगा, हम उसको पता लगा सकते हैं अगर 70 को ग्रोथ रेट R से डिवाइड किया जाए। मान लेते हैं कि ग्रोथ रेट imagine that we have a population growing at 4% per year, which is a pretty high rate of growth. So by the rule of 70 we know that doubling time is equal to 70 divided by growth rate, that is 17.5, यानी कि 17.5 साल में ये डबल हो जाएगा। सो ये 70 रूल है, याद करने की जरूरत है, अक्सर पूछा जा सकता है। 10. The number of babies produced per 1000 individuals is called natality. Yes, it is natality, not immigration, not mortality. 11. Population pyramids are useful to, here correct option is B, express the age sex distribution. 12. The zero population growth due to equal birth and death rates is called demographic transition. जी हाँ, याद करने की जरूरत है। What is demographic transition? So that is growth, population growth, zero population growth due to equal birth and death rates। जहाँ पर equal birth या death rate की बात आए उसको हम demographic transition नाम। 13. The average life expectancy around the world is currently increasing. Correct option is B. 14. The force which acts against the achievement of the highest possible level of population growth is known as environmental resistance. Correct option is D. 15. Short-term properties of the atmosphere at a given place and time is referred to as weather. Correct option is D. 16.
Global atmospheric temperatures are likely to be increased due to burning of fossil fuel. Correct option is A. 17. Global warming could affect A. Climate change, food production, melting of glaciers. जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज टी. 18. Which of the following is not a solution of global warming? So deforestation, reducing fossil fuel consumption, planting more trees, ये सब सोल्यूशन हैं ग्लोबल वार्मिंग के, बट डिफॉरेस्टेशन इज नॉट. 19. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग. करेक्ट ऑप्शन इज बी. 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑक्सीजन. Whereas carbon dioxide, chlorofluorocarbons, methane, they are all greenhouse gases. 21. Which important greenhouse gas other than methane is being provided from the agriculture fields? So correct option is B. Nitrous oxide. 22. Which of the following? नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड से मेथेन ज़्यादा निकलता है लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है. Which of the following gases contributes maximum to the greenhouse effect on the earth? Carbon dioxide. So here correct option is A, क्योंकि भारी मात्रा में उत्सर्जित होता है. 23. The greenhouse effect is due to, correct option is B, impermeability of long wavelength radiations through CO of the atmosphere. 24. The primary cause of acid rain around the world is sulfur dioxide. Normally they are oxides of nitrogen and sulfur. So जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट है. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जो भी हमने बताया, sulfur and nitrogen oxides SO and NO. So this was all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it. And if you have liked it, please do not forget to subscribe my YouTube channel R Classes and press the bell button and pass it on to others, those who are needy now and in the future. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.